Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the third method of control of bacteria, that is vaccination and immunization. और आज हम इस टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी डिस्कस करेंगे that is related to the discovery of bacterial vaccines. So let's move to the classboard. So dear students, control of bacteria. So in the previous lectures, we have discussed the two methods which are used to control bacteria. Number one, the physical methods. So in physical methods, we discussed three methods or three processes to control bacteria. Number one, heat. Number two, radiations. And number three, filtration. Clear? And then in the previous lecture, we have discussed the chemical methods. So we have discussed various chemical methods, which included antiseptics, the chemicals which are used to inhibit the growth on living surfaces, and disinfectants, the chemicals which are used to kill the bacteria and the other microbes on non-living surfaces. Then we discussed the chemotherapeutic agents, and antibiotics. Clear? So chemotherapeutic agents and antibiotics, they work with the natural defense mechanisms. ये हमारे कुदरती तौर पर मौजूद जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसके साथ मिलकर काम करते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं. ठीक है, द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड द एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ काम करेंगे, ये हमारे नेचुरल डिफेंस के साथ काम करते हैं. इनकी बात नहीं हो रही. ठीक है, ये टॉपिकल जो preventive measures हैं, topical means applied on the skin or on the non-living surfaces. और ये after being diseased condition, जब disease हो जाएगी उसके बाद फिर हम chemotherapeutic agents या फिर antibiotics को इस्तेमाल करते हैं. इन दोनों में difference बताया था आपको. Chemotherapeutic agents, these are the chemicals which are of the synthetic origin, while the antibiotics, their origin is natural. अब students, in antibiotics या फिर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, इनमें दो तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं. ठीक है, आपने ग्रेड 10 में इनकी क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी एंटीबायोटिक्स की. सो उसी तरह से उसी के निस्बत से माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी साइड का वर्ड आता है, CIDE,
तो इसका मतलब होता है टू किल, ठीक है, जैसे सुइसाइड, जैसे होमिसाइड, क्लियर। सो साइड मीन्स दिस साइड, CIDE, इट मीन्स टू किल। सो माइक्रोबिसाइड का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, ठीक है। सो द माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट which kills bacteria and microbes immediately. तो ऐसे इफेक्ट को जिसमें जैसे ही उस केमिकल को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और फौरी तौर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, दे गॉट किल्ड, इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट। और इसी के साथ इसके कंपैरिजन में माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट, माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट so it is the effect in which the growth of microorganisms or microbes is controlled by inhibiting their reproduction, उनके रिप्रोडक्शन रेट को रोक दिया जाता है, and keeping their population at constant level. क्लियर। तो इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट। माइक्रोबी मीन्स माइक्रोब्स एंड स्टैटिक मीन्स टू रिमेन कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है इन केमिकल्स की वजह से कि जिसमें माइक्रोब्स को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली बैक्टीरिया को, उनको रिप्रोड्यूस नहीं होने दिया जाता, बल्कि उनकी जो ग्रोथ फेज है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जिसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते या उनको कंट्रोल कर लिया जाता है इस तरह से कि मज़ीद रिप्रोडक्शन रेट उनका ना हो सके, जिसकी वजह से वो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टैटिक रहती है। और जो ग्रोथ स्टैटिक कौन सी फेज में रहती है डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ, मींस टू कीप बैक्टीरिया, टू कीप बैक्टीरिया, अगर हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात करें, टू कीप बैक्टीरिया इन स्टेशनरी फेज। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्टेशनरी फेज में क्या होता था कि जितने बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही उनकी डेथ भी हो रही है, सो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट। और जहाँ तक बात है मोड ऑफ एक्शन की ऑफ दिस केमिकल्स,
the mode of action चाहे वो फिजिकल एजेंट्स हैं चाहे वो केमिकल एजेंट्स हैं वो वेरी करेगा, ठीक है। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स वेरी, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। द डैमेज जो नुकसान पहुंचाया जाता है बैक्टीरिया को वो किस नौयत का हो सकता है। द डैमेज में बी टू द malfunctioning ऑफ सेल वॉल, उनके सेल वॉल जो है ऑफ सेल वॉल इस लेवल पे डैमेज हो सकता है, और malfunctioning of the plasma membrane ये केमिकल्स इस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, या जो फिजिकल एजेंट्स है वो इस तरह से इफेक्ट करेंगे, या फिर by making the malfunctioning that leads to the damage by these chemical and physical agents leads to the malfunctioning of the enzymes, उनके अंदर मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं चाहे वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं या जो रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए होती है, उसमें हर तरह के एंजाइम्स रेस्पिरेटरी और द रेप्लिकेटिव एंजाइम्स, दोनों तरह के एंजाइम्स जो है उनकी मालफंक्शनिंग होगी, या फिर द मालफंक्शनिंग ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर? तो इस तरह से डैमेज पहुंचाते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन इनका यानी है तो ये चार ही रास्ते, लेकिन चाहे वो फिजिकल एजेंट है चाहे वो केमिकल एजेंट है, जो हमने पढ़े से फिजिकल एंड द केमिकल एजेंट्स, उनका मोड ऑफ एक्शन वेरी करेगा, लेकिन वो महदूद किस हद तक हैं, इन चारों ये इनकी लिमिट्स हैं। इन्हीं चार मोड ऑफ एक्शंस के ज़रिए वो इनको जो है बैक्टीरिया को या तो किल करेंगे या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। नाउ देयर इज अ थर्ड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया which is very much important as a long question, that is vaccination and immunization. The third method which is used to control the bacteria. So the methods to prevent and to control infectious diseases include, इसमें कौन कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जा सकता है? Immunization, for example vaccination, or antisepsis,
the procedures which reduce the possibility of infection Number 3 is chemotherapy in case of cancer patients. And number 4 is the public measures. इन चारों तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, इन चारों वेज को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए. ठीक है. सो मेजर्स, अब पब्लिक मेजर्स में क्या आ सकता है? द वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी का साफ होना, जैसे कि गली मोहल्लों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, फिल्टर प्लांट्स लगाए जाते हैं. ठीक है. एक ये तरीक़ेकार है पब्लिक मेजर्स में जो लिया जा सकता है. एंड द वेस्ट डिस्पोजल, तो ये गली मोहल्लों से लेकर और एट द टाउन लेवल एंड देन एट द सिटी लेवल, देन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये इनके जो वेस्ट डिस्पोजल है, जिस तरह का वेस्ट, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है चाहे वो लिक्विड वेस्ट है, उनको किस तरह से रिमूव करना है और किस सेफली रिमूव करना है, ये भी पब्लिक मेजर्स में आएगा. एंड फूड प्रिजर्वेशन, कि किस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है या किया जाता है. सो ऑल दीज आर द पब्लिक मेजर्स विच आर इंक्लूडेड. तो यहाँ पर हमारा जो असल टॉपिक रिलेटेड है वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड. तो इस टॉपिक में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो है बैक्टीरिया के खिलाफ वो शुरू हुई. सो द कंट्रीब्यूशन इट लीड्स टू लुईस पास्चर. ठीक है. सो लुईस पास्चर इसका नाम हम कई चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस हुआ, चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस हुआ, चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस हो रहा है. सो लुईस पास्चर made many discoveries related to or concerning the prevention and the agents of infectious diseases. क्लियर? दोनों तरीकों के ऊपर उसने काम किया कि किसी तरीके जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं उसका पता लगाया जा सके, फिर उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, उसके हवाले से भी काफ़ी डिस्कवरीज की. सो इन 1880s 1880 की दिहाई में, इन 1880s he was successful. He means the Louis Pasteur. He succeeded in isolating the bacteria or the agent responsible for chicken cholera, इसको फाउल कॉलेरा भी कहा जाता है,
क्लियर, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फॉल कॉलरा। तो इसका जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल था, जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल था, उसने 1880 की दिहाई में उसको आइसोलेट कर लिया। ये कामयाब हो गया, बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन का मतलब है कि उसको प्योर कल्चर में ग्रो करवाना। एंड ही grew the bacterium in pure culture. Clear? अब चिकन कॉलरा ये एक बहुत ही हाईली कंटेजियस डिजीज है चिकन्स के अंदर, खासतौर पर जो है बर्ड्स के अंदर भी, लेकिन स्पेशली जो चिकन है उनके अंदर, जिनमें उनके जो मेटल्स होते हैं, वॉटल्स एंड देयर joints and the skin, it becomes infected and swollen. हाईली कंटेजियस डिजीज है, एक्यूट फॉर्म में ये डेथली है, ठीक है, ये डेथ कॉज करती है, डेडली डिजीज है, ठीक है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, the bacteria or the bacterium for chicken cholera is Pasteurella maltosida. So that is the name of the bacterium which causes chicken cholera. तो इसको उसने एक्चुअली आइसोलेट किया था और फिर उसको ग्रो करवाया। अब वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने आइसोलेट कर लिया। अब उसके लिए फिर उसने क्या किया, ये साबित करने के लिए कि मैंने बैक्टीरिया को जो है वो आइसोलेट कर लिया है, उसने एक जो है वो एक्सपेरिमेंट, एक पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो अरेंज की, जिसमें उसने ही यूज्ड टू इनोकुलेट द चिकन, और जो हेल्दी चिकन हैं उसको इनोकुलेट किया ताकि वो साबित कर सके कि उसने बैक्टीरिया को जो चिकन कॉलरा के लिए है उन चिकन को चिकन कॉलरा हो जाए और मरने लग जाए, ठीक है। तो इस चीज़ की खोज में उसने वही सारे प्रिंसिपल्स जो हैं जो कि रॉबर्ट कॉश ने बताए थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के, वो जो शुरू में हमने इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक था और उसमें, और सेकंड टॉपिक जिसमें हमने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ उसके हवाले से बात की थी, जो रॉबर्ट कॉश ने पेश की थी, उसके 4 पॉस्टुलेट्स जो पॉस्टुलेट्स उसने बताए थे कि किस तरह से उसको आइसोलेट कर सकते हैं। अगर ससेप्टेबल एनिमल को उसको अंदर इनोकुलेट किया जाए तो उसको भी वो डिजीज़ हो जाती है और उससे हम उसको दोबारा से आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर उसने काम किया, ठीक है। सो ही वर्कड on the principles defined by Robert Koch of germ theory of disease and in order to show that he has isolated the bacterium or bacteria for chicken cholera, he arranged a public demonstration. Arranged a public demonstration to prove the work. जो उसने काम किया उसको प्रूव करने के लिए कि वाकई में उसने बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया है, उसने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रख दी। इससे पहले वो अपनी लैब के अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था
वो इसे क्योंकि रॉबर्ट कॉश के उसने जो प्रिंसिपल्स उसको रीड किया और उसको फिर उसके बाद उसको अप्लाई किया तो उसको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मीन्स के वो हेल्दी चिकन को अपनी लैब के अंदर हेल्दी चिकन को वो उसके जो प्योर कल्चर्स थे इस पेस्चुरेला के मल्टोसिटा उसको जब इनोकुलेट करता था तो जो चिकन्स थे वो बीमार हो जाते थे और कुछ ही दिनों के अंदर वो मरने लग जाते थे। ठीक है, तो वो बहुत खुश हुआ कि उससे बड़ी कामयाबी हासिल की। सो अब उसने क्या किया कि साबित करना था, जाहिर बात है आप कोई अचीवमेंट जो है वो हासिल करते हैं, कोई भी चीज़ अचीव करते हैं किसी बहुत अच्छी जो अनोखी और पहली दफ़ा जो इससे पहले किसी दुनिया में साबित ना की हो, सो यू नीड टू शो दैट यू हैव प्रूव्ड समथिंग। तो उसके लिए फिर उसने ये पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो रखी। ठीक है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रखी, लेकिन उसमें तो कुछ उसके साथ अनोखा ही हुआ। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन by pasture। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लैब में उसे सारे रिजल्ट सक्सेसफुल मिले। सो ही इनोकुलेटेड मीन्स द pasture इनोकुलेशन आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ लिक्विड इनसाइड द बॉडी स्पेशली ऑफ द वैक्सीन्स या इस तरह का कोई भी चीज़ या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिक्विड फॉर्म की शक्ल में कोई भी चीज़ बॉडी में इंजेक्ट की जाए तो उसे इनोकुलेशन कहा जाता है। ही इनोकुलेटेड द प्योर कल्चर of Pastorella maltosita into healthy chicken। तो उससे पहले क्या उसने रिजल्ट्स हासिल किए थे जब खुद से वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि जब उसने प्योर कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया हेल्दी चिकन में तो दे गॉट डिजीज्ड एंड दे स्टार्ट डाइंग, तो वो मरना शुरू हो गए चिकन जो बीमार होने के बाद। आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ पेस्चुरेला माल्टोसिटा द चिकन गॉट चिकन कॉलरा एंड दे स्टार्ट डाइंग। क्लियर, लेकिन यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स अजीब भी हुए। बट ड्यू टू हिज डिसमय टू हिज डिसमय उसकी बदकिस्मती और मायूसी उसको हुई, द चिकन didn't get the disease, उन्हें वो बीमारी नहीं हुई, and not died, और ना ही वो मरे। तो काफ़ी परेशानी का सामना, शर्मिंदगी का सामना हुआ कि इससे पहले तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन जब वो लोगों के सामने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा है तो उसमें उसको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो उसने अपने जो लेक्चर्स जो अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिव्यू किया, उसके हर स्टेप को कीनली रिव्यू किया। हम बायोलॉजिकल मेथड में यही चीज़ तो पढ़ते हैं कि जब भी आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं किसी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर और फिर उसको अल्टीमेटली टेस्ट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट की बेस पे, तो जब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स वो आपके हाइपोथेसिस से या ऑब्जर्वेशन से ना मिलें, सो वी हैव टू गो बैक, हमें हर चीज़ को दोबारा से चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर के जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सो एज इट इज तो पास्टर looked keenly on each step of the experiment and he suddenly knew
or suddenly get the culture which he inoculated that was not fresh. Rather, it was a few days or a week old culture. तो जब वो स्टेप्स को अपने देख रहा था, कीनली ऑब्जर्व कर रहा था बहुत गौर से कि मैंने कहाँ पर गलती की, तो अचानक से उसने क्या देखा कि जो कल्चर उसने इनॉकुलेट किया है वो फ्रेश कल्चर नहीं है, वो है तो प्योर कल्चर। प्योर का मतलब है उसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया शामिल है, पैस्टुरेला मल्टोसिटा, लेकिन वो फ्रेश नहीं था। वो गलती से मिस्टेकनली उसने एक हफ्ता पुराना या कुछ दिन पुराना जो कल्चर है, ओल्ड कल्चर जो था, प्योर बट प्योर कल्चर ऑफ दिस बैक्टीरिया, उन हेल्दी चिकन को इनॉकुलेट किया। तो उससे क्या हुआ, जो उसको रिजल्ट्स एट द स्पॉट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो इससे क्या उसने अखज़ किया, व्हाट ही लर्न फ्रॉम दिस, he learned from this and he learned that bacteria lose their virulence कहते हैं डिजीज कॉजिंग पावर को, ठीक है, the ability to cause disease, that is known as virulence, lose their virulence or pathogenicity on standing and becoming old, उसे पड़े रहने से और पुराना हो जाने से उसके अंदर जो विरुलेंस है वो खत्म हो जाती है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। बट स्टिल दीज अटेनुएटेड, यहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ अटेनुएटेड। अटेनुएटेड का मतलब होता है लाइफ बट नॉट एबल टू कॉज डिजीज, लाइफ but not able to cause disease. So, but still these attenuated bacteria provoked the immune system of the host and prevented it from disease. तो ये एक एक्सीडेंट था, वो करने कुछ जा रहा था लेकिन उसके रास्ते में उसे एक नई चीज़ सामने आ गई कि अगर बैक्टीरिया कुछ अरसा पड़े रह जाएं, कुछ पुराने हो जाएं, और बेशक वो प्योर कल्चर में है, लेकिन अगर वो अपनी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है, जो विरुलेंस है, उसको खो देते हैं। और ऐसा ही हुआ था कि उसने जो बैक्टीरियल कल्चर इनॉकुलेट किया था वो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में, वो कुछ पुराना था तो प्योर लेकिन वो पुराना था। तो इससे वो जो चिकन है उनको ना तो डिजीज हुई और ना ही वो मरे, बल्कि क्या देखा गया, उल्टा उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। जब उनके ब्लड को एग्जामिन किया गया तो उनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद थी। इट मीन्स कि उन्होंने उनके जो बैक्टीरिया था, वो जो अटेनुएटेड या लाइव बैक्टीरिया था, जो अपनी विरुलेंस खो चुका था, उसने उनके जाके इम्यून सिस्टम को प्रोवोक किया और उनसे उनके इम्यून सिस्टम ने, उस होस्ट के इम्यून सिस्टम ने, इन दैट वेरी केस द चिकन, उन्होंने एंटीबॉडीज बनवाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब वो चिकन जिंदा है।
तो इससे फिर उसने दो चीज़ें, दो पॉइंट्स निकाले थे। एक टर्म निकाली उसने वैक्सीन और दूसरा वैक्सीनेशन। लेकिन उससे पहले फिर एक इसको कंफर्म करने के लिए, इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए ही अगेन द पास्चर used to inoculate the bacterium for anthrax। एंथ्रैक्स में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर के शुरू में। ये एक रेस्पिरेटरी खास तौर पर डिसऑर्डर है जो शीप्स और कैटल्स के अंदर होता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से इनकी ब्लड पॉइजनिंग और डेथ जो है वो हो जाती है कैटल्स की। उनके ऊपर उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब उसने क्या किया कि उसने इनोकुलेट किया, द पैस्चर यूज्ड टू इनोकुलेट द बैक्टीरियम फॉर एंथ्रैक्स, यानी कौन सा बैक्टीरियम को, जो पुराना कल्चर, इसी प्रोसीजर को दोबारा से उसने रिपीट किया, ठीक है, एंथ्रैक्स। बट द कल्चर was again old and he was successful in getting the same results। तो सेम रिजल्ट्स उसने हासिल किए जैसा कि यहां से हासिल किए थे। सो नाउ ही टर्म्ड he introduced the term vaccine। He called the attenuated bacterial culture as vaccine, and immunization from by using vaccine as vaccination। और यहीं पर फिर वो वर्ड बेसिकली वैक्सीन का मतलब भी बताया गया। इट इज़ डिराइव फ्रॉम a Latin word, it is a Latin vacca, which means cow। और फिर उसने ऑनर भी किया था एडवर्ड जेनर को। Pasteur honored एडवर्ड जेनर। इसके हवाले से भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एडवर्ड जेनर के हवाले से इन चैप्टर नंबर 5 कि किस तरह से उसने वैक्सीनेशन जो है वो उसको डिस्कवर किया था। द फर्स्ट एवर वैक्सीन विच वाज मेड बाय हिम दैट वाज अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है, दैट इज अ वायरल डिजीज। तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया वो चिकन कॉलरा के खिलाफ, फिर उसके बाद एंथ्रैक्स के खिलाफ, फिर उसके बाद उसने हाइड्रोफोबिनम यानी रेबीज के खिलाफ भी वैक्सीन जो है वो बनाई थी। ही ऑनर्ड एडवर्ड जेनर who discovered vaccine in 1796। He wanted to test the hypothesis। उसने ऑब्जर्व क्या किया था
और उसी की बेस के ऊपर हाइपोथेसिस बनाया था। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हाइपोथेसिस दैट द पर्सन suffering from cowpox is less likely to get smallpox। ठीक है, सो ये उसकी हाइपोथेसिस थी, इसके ऊपर उसने काम किया। फिर आपको याद होगा कि उसने एक मदर थी, उससे बात की, उसके 8 साल बेटे के से, जिसका नाम था जेम्स फिप्स, उसको कन्विंस किया कि वो इस हाइपोथेसिस के ऊपर काम करना चाह रहा है। उस वक्त ये स्मॉल पॉक्स इसी तरह ही ख़तरनाक थी जैसे कि कोविड-19 ख़तरनाक है। और फिर उनकी मदर ने वॉलंटियर किया कि यस, अगर मेरे बेटे की वजह से कई लोगों की जान बच सकती है, सो आई वॉलंटियर। तो उसने बेटे को वॉलंटियर किया और फिर उसके बाद ही इनोकुलेटेड द जेनर inoculated 8 years old James Phipps with cowpox lesion, जो कि उनके जो मिल्कमेड थे उनको हो चुकी थी काउपॉक्स। बेसिकली जब वो दूध दोने वाले, जो ये बेसिकली काउपॉक्स काउ को होती है और वहीं से ये आगे इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती है, वहीं से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंसान। सो यही उसका हाइपोथेसिस था कि जो मिल्कमेड हैं उनको स्मॉल पॉक्स जो है वो कम होती है। उसने ये ऑब्जर्व किया था। इसी हाइपोथेसिस और इसी ऑब्जर्वेशन को उसने स्टेप बनाया और उसी के ऊपर फिर ये एक्सपेरिमेंट किया इस बच्चे के ऊपर। उसने फिर इनोकुलेट किया जेम्स फिप्स को काउपॉक्स लायन से, ठीक है, यानी उसकी पस से। द बॉय गॉट cowpox, उसे cowpox हुआ। आफ्टर 6 weeks Jenner inoculated James Phipps with smallpox, but he didn't get the disease, means the smallpox। और इस तरह से फिर वो कामयाब रहा एडवर्ड जेनर, और उसी के जो काम था फिर उसको मज़ीद आगे जो लेकर चला। और उसने जब अपनी खुद से डिस्कवरी की पैस्चर ने, तो फिर उसने इसको ऑनर भी किया था इसके वर्क को, एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था। क्लियर? एंड इन द लास्ट पैस्चर also made vaccine for hydrophobia or rabies, which is caused a nervous disorder which is caused by the bite of rabid dogs, cats, foxes and other animals। तो इसके खिलाफ भी वैक्सीन डिस्कवर की थी लुइस पैस्चर ने। तो तीन वैक्सीन्स जो इसके जो है वो कंट्रीब्यूशन पे मौजूद हैं। द फर्स्ट वन वाज अगेंस्ट द चिकन कॉलेरा। ही वर्क फॉर द एंथ्रैक्स के ऊपर भी सेम वही काम हुआ और सेम रिजल्ट्स मिले। फिर उसने उसके बाद जो है वो हाइड्रोफोबिया यानी कि जो रेबीज़ के जो कि पागल कुत्तों के या बिल्लियों के काटने से या दूसरे जानवरों के काटने से हो जाती है, सो उसके खिलाफ भी उसने वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त की थी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।